मेरा नाम ज़ारा अली है, ये मेरी मदर हैं रेहाना खातून। हम लोग नोएडा के रहने वाले हैं, एक्सोटिका ड्रीमिंग सोसाइटी के। पिछले 40 साल से मेरी मॉम को हिप जॉइंट में इशू था। बचपन में एक इंजरी की वजह से उनका पैर जो है वो एक लेवल पे नहीं था, जिसकी वजह से बहुत पेन रहता था और रोज़ उनको एक पेन किलर खानी पड़ती थी। पिछले 40 साल से ये प्रॉब्लम चलती जा रही थी, तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे इस मामले में और रोज़ एक पेन किलर की वजह से किडनी पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोगों ने पिछले 5 साल पहले हमने एक बार डिसाइड किया कि मॉम की सर्जरी हो जाए हिप जॉइंट की। पर उस टाइम पे मेरी मॉम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी एंड शी टूक अ स्टेप बैक और उन्होंने नहीं कराई सर्जरी। फिर अभी 1 हफ्ते पहले हम लोग डॉक्टर अंचित उप्पल से मिले और पहली मीटिंग के बाद ही मेरी मॉम को उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट फ़ील कराया। उन्होंने अपने प्रीवियस सक्सेसफुल केसेस दिखाए, उन्होंने बताया कि कितने बड़ी उम्र के लोगों के भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं। इसके बाद मेरी मॉम को बहुत लगा कि वो करा सकती हैं। ऊपर से सर्वोदय हॉस्पिटल भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ था कि हम लोग को लगा कि ये एक बेटर चॉइस होगा। बाकी मेरी मॉम बताएंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम थी। नहीं, वही बस पेन की प्रॉब्लम थी और एक पैर छोटा होने की वजह से दूसरे पैर में भी पेन शुरू हो गया था। इस वजह से चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बॉम्बे में भी दिखाया 40 साल पहले, उन्होंने एक पेन किलर लिखी। ऑपरेशन उन्होंने भी बताया था लेकिन मैंने कराया नहीं। लेकिन डॉक्टर अंचित उप्पल से मिलके मुझे कॉन्फिडेंस हुआ थोड़ा कि मैं शायद ठीक हो जाऊँ। तो मैंने ऑपरेशन कराया, मगर रिकवरी बहुत अच्छी है। सर्वोदय हॉस्पिटल मेरे हिसाब से नोएडा के लिए, खासकर ग्रेटर नोएडा के लिए इट्स अ बिग ब्लेसिंग। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा स्टाफ और इतने अच्छे डॉक्टर्स। मतलब हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग एक मतलब व्हेन यू थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल आपको लगता है कि बहुत एक स्ट्रिक्ट रहेगा माहौल एंड दे वोंट बी दैट मच एक इमोशनल सपोर्ट जो एक पेशेंट को चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। बट आई थिंक सर्वोदय हॉस्पिटल में एंड विद डॉक्टर अंचित उपल एंड द नर्सिंग स्टाफ और मैनेजमेंट भी इनफैक्ट एवरीबडी, मुझे नहीं लगता कि किसी हॉस्पिटल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। एवरी आवर देयर वाज समवन हु वाज कमिंग टू आस्क अस कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। और बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम रहता है, आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो मुझे नीचे जाने में, कहीं जाने में तो बार सोचना नहीं पड़ता था। मुझे पता था देयर बी समवेयर समवन इन द रूम टू टेक केयर ऑफ माय मदर, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा हमें। और मॉम का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, शी वाज हैप्पी एक्चुअली इन द हॉस्पिटल, जो हमें उम्मीद नहीं थी। इन द एंड हम कहेंगे थैंक यू डॉक्टर अंचित उप्पल एंड थैंक यू सर्वोदय हॉस्पिटल। Patient Mrs. Rehana Khatun, who is 57 years old, had presented to us with the history of a childhood injury, probably before the age of 10 years, where she had probably a fractured shaft of femur, which was managed by quacks in her local village. And subsequently, again, she had the femur shaft fracture, which was probably because of a bullock cart which passed over her thigh, which was again mismanaged, and probably she doesn't even remember how it was managed because she was too young to remember the events. When she attained maturity, say around the age of around 12-13 years, she again had a repeat injury to the same right leg, and she had a fractured neck of femur. Because it was a childhood injury, she had her growth remaining, and all the injuries, repeat injuries on the same side, led to progressive deformities of the hip, as well as with the progression of growth, she had developed deformities of the spine, which were now, when she presented to us at the age of 57, were fixed spinal deformities in form of gross kyphosis as well as scoliosis. So when she presented to us, she had been to multiple doctors who had suggested variety of solutions to her, but she was probably not very convinced for surgery. I told her that she would definitely benefit from a total hip replacement because
Her main problems were she was having a limb length discrepancy of around 10 centimeters with a fixed hip with a fixed spinal deformity. After presentation, we had evaluated her in detail, wherein we did radiological views of the spine, hip, as well as femur, and we could identify that femur was malunited in S-shaped curve, hip was secondly arthritic, there was kyphoscoliosis, fixed kyphoscoliosis of the spine. So what we had planned, we did execute, and we had to do a cemented stem in the femur with uncemented cup. Because the acetabulum was very shallow, we had to reconstruct the acetabulum as well. And we had used a dual mobility system because the spinal deformities were all fixed. So my message from this is, probably if you have childhood injuries, it is always better to manage it in the childhood itself. Otherwise, when you grow old, managing these becomes a challenge. Yes, we can manage all the injuries at any age, but sooner the injuries are managed, the results are better. Thank you.